Hello everyone, so today we are going to learn some basics about academic writing down. If you have not subscribed to our channel, make sure just click the subscribe button and also the bell icon in order to receive all the future notifications and of videos. So let's get started. एकेडमिक राइटिंग टास्क क्या होता है, उसमें सबसे पहले हमें इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द टास्क इज अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ instructions you need to follow और आपको क्या करना है, how to respond them, things like that. So now we shall begin with the first line. So what do you need to do in this task 1? So in task 1 of the Arts academic paper, you will be asked to describe a chart, graph, table, diagram or map. You need to write at least 150 words and it is best to spend 20 minutes on task 1 to leave yourself enough time for task 2. And here one thing you should also remember that task 2 is worth more marks. Because task 1 is for 3 bands whereas task 2 is for 6 bands, which totally combines 9 bands of your writing module. So 20 minutes ही आपको इस पे स्पेंड करने हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, और 150 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने हैं. हाउएवर यू कैन राइट 160 to 170. आई ऑल्सो रिकमेंड दैट. सो अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स. राइटिंग टास्क 1 में क्या होता है, हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं कई तरह के. सो फर्स्ट विजुअल इज कॉल्ड लाइन ग्राफ और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रेंड्स. ट्रेंड्स में क्या होता है, एक लाइन्स होती हैं और डायग्राम जो होती है उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, किसी भी तरह का डाटा होता है इन फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, हमें उसे डिस्क्राइब करना होता है. सेम पाई चार्ट पाई ग्राफ होता है, इसमें जो कंप्लीट पाई is about 100% a portion of anything. Next is bar graph. So it looks like this. Bar graph आपका ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ओनर ग्रोथ यूके में कितनी है, दिस लाइक दिस, एंड ओनर्स 1995 में क्या है, जो पिंक बार्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1995 में ओनर्स कितने थे, और जो ग्रीन बार्स हैं, ग्रीन वंस, ओनर्स कितने थे 2000 में. सो इनमें ग्रोथ हुई है, क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑल में ग्रोथ हुई है. सो इतना सारा डाटा है, आपको कैसे इसको डिस्क्राइब करना है ये हम सीखेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, describing a process. So process chart looks like this, and here's a new technology plans to save planet, hydraulic arms to lower centrifugal pump. So ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है और सक्शन पंप लगा हुआ है, रोटेटिंग ब्लेड्स लगे हुए हैं, एंड हियर व्हाट इट डज, लार्ज ट्यूब टू कैरी मड, यहाँ से मड कैरी करके यहाँ पे लेके जा रहा है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ पे एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है. सो इन दैट वे यू कैन आइडेंटिफाई हाउ टू डिस्क्राइब दैट प्रोसेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड what kind of task, what kind of visual graph you are going to explain. The final one is called map. Also you get a table in that task 1, but here is next is map. So map can look like this. This is about water cycle. So maps में sometimes आपको क्या होता है, arrows भी शो होते हैं. So यहाँ से क्या होता है, invisible water vapors होते हैं, जा रहे हैं wind की इनको आगे लेके जा रही है, और vapor cools फॉर्मिंग क्लाउड्स, यहाँ से भी वेपर जा रहे हैं ट्रीज से, और क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, एंड आफ्टर दैट दे कम ऑन ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ रेन्स, एंड आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो कलेक्टेड, एंड अगेन river in the form of rivers, it flows into the sea. So here you can see that how the map works and what is the function of each and every arrow. Here are some tips to help you with the task. So first of all, क्या करना है आपको, read the question carefully and make sure you understand the graph, chart, table, diagram or map, and be clear about what you are describing, what you are going to describe. Write a short introduction by paraphrasing the question. That is, rewrite the question in your own words. Paraphrasing है जो बहुत ही important aspect है IELTS writing का. So if you can do this, you can easily get high band score. So be sure to give a summary. For example, आपको क्या करना है, look at a big picture. What is happening overall?
there is no need to mention any numbers in this part. जो summary होती है, we can also call it overall. Try to use a variety of sentence structures and vocabulary words. Separate your paragraphs. Do not forget that. Choose the key information to describe or compare. Also, make comparisons where you can. Avoid simply stating what is in the question. So, examiner क्या चाहता है? Examiner चाहता है कि जो आपने आपके पास में इंफॉर्मेशन उसने दी है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और मैप, आप सिंपली उसको डिस्क्राइब ना करें, आप उसको कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्क्राइब करें. सो दैट इज द मेन कीवर्ड हियर फॉर राइटिंग टास्क 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सिंपली जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है उसको एक साइड से स्टार्ट करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, सिंपली डिस्क्राइब करते हैं और ऑल द थिंग्स जो भी व्हाट इज हैपनिंग ओवर द पिक्चर सबको डिस्क्राइब कर देते हैं. सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर. यू शुड स्टॉप डूइंग दिस. आपको दैट इंफॉर्मेशन एक पैटर्न में देनी होती है और एक कंपैरिजन की फॉर्म में देनी होती है. हम आगे सीखेंगे इसको कैसे करना. सो डिस्क्राइब स्पेसिफिक डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल, यूज द नंबर्स इन द चार्ट. कितने अमाउंट में नंबर्स यूज करने हैं और सारे नंबर इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. टेबल और ग्राफ टू हेल्प यू डिस्क्राइब द की पॉइंट्स. डिवाइड योर मेन डिस्क्रिप्शन into 2 paragraphs, and this will help you to have a clear structure and organization, especially important when the question has 2 separate diagrams. So अगर आपके पास में एक से ज़्यादा डायग्राम्स होगी, 2 होंगे फॉर एग्जाम्पल और 3 होंगे डायग्राम, so in that way you should be looking how to structure and organize your answer. So that's it in the terms of tables and maps. A couple of things to avoid. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ गलतियाँ करते हैं और वो मिस्टेक्स उन्हें हाई बैंड स्कोर्स नहीं गेन करने देती. सो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको अवॉइड करना है. मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दोज थिंग्स. सो डिस्क्राइबिंग एवरी सिंगल डिटेल एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ नंबर्स. You don't need to mention them all. You just need to mention only key points, the important feature of your task. That is also written in the end or in of the statement of your task. Give reasons or sharing your opinions. The question will not ask you to do this. So अगर हम टास्क 1 की बात करें तो इसमें हमें कोई भी रीज़न इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा जाता और ना ही कोई ओपिनियन कहा जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इन माई करियर दैट वो टास्क 1 में भी अपना ओपिनियन ऐड करते हैं. इन माई व्यू, इन माई पॉइंट व्यू और इन अ नटशेल, दैट using that kind of language is also you are making sure that you are providing your own opinion, which is totally inappropriate. So you should stop doing that. Another thing, that what tips do you have for task 1 of the academic writing paper? Share your thoughts with the other learners. I want you to do that. अगर आपके पास में राइटिंग टास्क एकेडमिक टास्क पेपर के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आई रेकमेंड यू टू डू सो दैट अदर स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो बिफोर यू बिगिनिंग, स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जो भी कीवर्ड्स होंगे हमारे टास्क 1 में उनको अंडरलाइन कर लेना है. राइट रिलेटेड वर्ड्स. कैसे? टर्न नाउन्स इनटू वर्ब्स, वर्ब्स इनटू नाउन्स, and adjectives into adverbs, etc. And you can also write opposite words, similar words and synonyms, etc. इससे क्या होगा, आप most of the words को change कर देंगे और जो word formation, which is very important here, the most important factor is paraphrasing, which you can do using different words. And also you are showing the examiner that you can use different forms of the same word. So you can do so by turning nouns into verbs, verbs into nouns, or adjectives into adverbs. Circle and highlight the graph. Use arrows. For example, make notes. Circle the biggest and smallest part. और आपको क्या करना है, इसमें जो biggest part है और जो smallest part है उसको हमें सर्कल कर लेना है. स्टेबल और अनचेंजिंग पार्ट्स हैं जो, उनको अलग से सर्कल कर लेना है. और सडन इंक्रीज हो रहा है अगर कहाँ पे, इन केस ऑफ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ,
उसको भी हम सर्कल कर लेंगे. सो इन दैट वे वी आर हाईलाइटिंग आवर इम्पॉर्टेंट एंड की फीचर्स. कि हमें इन्हें डिस्क्राइब करना है. So next is identify trends. A trend is the overall idea of the graph. Overall big picture में क्या हो रहा है, आपका ट्रेंड है जो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, that is most important. So what is happening, what happened, also you can see that what kind of graph it is, it's happening or it has already happened in the past, the main change over the time. And another factor is the most noticeable thing about the graph, the pattern over time, the pattern for different places or groups of people. Most IELTS graph will have two trends, or there will be two graphs with a trend in each. You could write about the two trends into separate paragraphs. Make sure you have identified the trends in the graph. So अगर आपके पास दो ट्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल दो लाइंस हैं लाइन ग्राफ में, तो आप उनको सेपरेट पैराग्राफ्स में लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द टाइप ऑफ ग्राफ, और इन दैट वे यू आर गोइंग टू मेक मोर कंपैरिजन. हियर वी कम व्हाइल यू राइट हाउ टू ले आउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंट्रोडक्शन. First sentence, describe the graph. You can use some slightly different words from the examiner or word forms from those on the question paper, but be careful to give the full information. Start, you can also start the graph shows, और यहाँ पे आप different words भी use कर सकते हैं, but the most important thing is that your sentence should be accurate, most of your knowledge. Graph shows, or you can say that the picture depicts, illustrate, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं बच्चे, वो गलत नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू हियर इज, जब यहाँ पे एक ग्राफ है, द ग्राफ शोज, तो वी नो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस इन प्रेजेंट बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस ग्राफ इन प्रेजेंट टाइम. So that is why you should use present indefinite here. You should not use past or future if your graph is in past or future. Next thing, second sentence that should be, this gives the trend or trends. You can put two trends in this sentence or only one. You could keep the other one for the conclusion. So overall, this is called your overall. A lot of students can write overall just after your introduction, or you can also write it at the end of all the paragraphs when you finish your task. So I recommend my students to write it just after the introduction. So what the overall consists of, what kind of things that you should put on in this overall, so that we will be learning. So paragraph first, what we are going to talk about, start with a sentence with no number. For example, so इसके first sentence में आपको क्या करना है, कोई भी नंबर नहीं शो करना है. You can start with the trend, क्या हो रहा है उसमें, or you can write the biggest or the highest value. For example, the city size increased sharply over the period. The most obvious trend in the graph is that women are having fewer babies. Oil production has increased slightly in all the countries in the graph. As you can see, यहाँ पे कोई नंबर नहीं यूज किया हमने, so you can start like that. Next, follow this sentence with an example. Sentence with number, for example, and perhaps another example. Another sentence with number. So keep alternating. What does it mean? इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि सिटी का साइज है जो इंक्रीज हो गया है शार्पली ओवर द पीरियड. अब वो कैसे हुआ है, पहले कितना था, अब क्या हुआ है उसका. फॉर एग्जाम्पल 99 में कितना था और 2001 में कितना है. सो यू शुड इंक्लूड दोज नंबर्स आफ्टर फॉलोइंग जस्ट दिस सेंटेंस. So that is going to help you with your cohesion and linking your structure. But you should do in paragraph 2 in case of trends. Start with a sentence with no number that we have already done. Again, you can do so if you are having two lines. So this was trend 1, your first line in line graph. This is your second line in case of line graph. So you should repeat the same process here with the second line. क्या हुआ over the period of time and
कैसे हुआ और कितना चेंजेस हुए, कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ, you should include that numbers here, but not in the first sentence. So after, when it comes to introduction, the second one is overall, first body paragraph, second body paragraph. You can make 4 or you can also make 5 paragraphs, but you should note here that you should not make more than 5 paragraphs. Finish by repeating the main trends or identify a second trend. Use different vocabulary. ओवरऑल क्या हुआ बिग पिक्चर में, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकला है आपका, यू शुड मेंशन हियर. डू नॉट हैव एनी नंबर्स इन कंक्लूजन. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. You could use words like most, majority, minority, a small number, but you should not include any numbers in the conclusion part. So that is very important thing to remember here. So while you are writing your task 1, you should avoiding some mistakes to do. So what are those mistakes? So these are tips that you should not do. Some do not. So do not give an opinion, because you are not asked to give any opinion in task 1 especially. Do not describe the x and y axis. Give the information only. You should not include what is happening around the x axis and what the y axis is representing. A lot of students do these mistakes. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, the numbers is on the x axis representing this, or on the y axis representing this. No, you should not do that. And the third tip is, do not write about everything on the graph. So here is a quick summary what you should avoid doing in order to get higher band scores. So pick the biggest. I am repeating this, do not write about everything what you see on the graph. You should only pick the biggest, the smallest, the main points, the main trends, and group similar things together. These are the only main features that you should include in your answer. Avoid including everything, every number on the graph. Do not write about the line or the bar. The line went up, the bar went down. So this is totally inappropriate. Instead, write about the idea. हो क्या रहा है. और यहाँ पे I want to mention कि बहुत सारे students हैं जो ये मिस्टेक करते हैं, जो आपका बेसिक सेंटेंस होता है कि उसमें हो क्या रहा है. दे गेट कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन के लाइन इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, या उनकी कोई हैबिट इंक्रीज हो रही है, या वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. इफ द ग्राफ इज शोइंग द पर्टिकुलर एक्टिविटी, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट sentence, because a lot of students who are not having any grammar mistakes, who are not having any confusion in other parts, they do this very common mistake in this part. And if you misunderstood this, your whole task is not going to be correct. So my dear, pay a careful attention to this, what I'm saying. The number of people increase हो रहे हैं, the number of people going to work increase हो रहे हैं, the number of people going to work by train increase हो रहे हैं. So you should be aware of writing. So क्या increase हो रहा है, so आपको ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. So when you are preparing your task 1, you should pay a little attention to this. What is happening? People increase हो रहे हैं या
10 words, and some long ones also, which include 12 to 18 words. But your average should be about 12 per sentence. A sentence without a number will usually be short, so use a mix. Here is my tip: you should use a mix. A sentence without a number followed by a sentence or two with a number, that we have already learned in the previous slide. So let's move to the next one. So here are some vocabulary for you. You need to know some special vocabulary for graphs. In the IELTS exam, you have to write only 150 words, so show how much vocabulary you know. You don't need to repeat the same words. I recommend my students to not to repeat the same word again and again. So that also makes your writing a bit boring. So in order to make it interesting and to get high scores, you should not repeat the words. For these are the words for movements up, and these are the verbs for movement down. Rose, went, up, increase, these are the second forms, so you can learn them. Here are some prepositions that you can use in your graph. So the problem with preposition is that a lot of students do different kind of prepositions in order to make their task effective, but sometimes they do not pay attention the words with that easily go together. For example, you should also use between and together, and in this period you are using that something has happened between 1995 and 2000. So that is very important. If you are having different graphs for 1995 and only for 2000, then you cannot write this. You cannot use these prepositions. Only if your graph is about trends or it's a bar graph that is showing the trend from 1995 to 2000. You can only use these prepositions at that time. I hope you understand that difference. From and to, sales rose from and to. From and to, you can use from for the beginning point or the beginning year or the beginning value, and to for the last year or the last value that you are going to mention. Sales fell to 150. So this is the last value of sales in March. This is a month, or you can also include the percentage. Sales fell by 50%. So here these are the adverbs and intensifiers that we are going to use in our sentences. How the sales increase or decrease, for example. So it slightly increased, a little, a lot, sharply, suddenly, steeply, gradually, gently or steadily. So if there is no movement, you should use this. Verbs with adjectives, verbs remained steady, were unchanged, did not change. For example, remain constant, remain stable, stabilized, words like that. Or in order to explain about the tops and bottoms, you should include words or phrases like these. Peaked, reached a peak, reached their highest level, fell to a low, sank to a trough, reached a bottom. So these are very helpful in order to get higher merit scores. I want to mention here that you don't need a very complicated words in your writing task 1, but the words that you have used, that should not be repetitive, and make sure आप उनको बार बार repeat नहीं कर रहे हैं. और another most important factor is that accuracy matters most. So words जो भी आपने यूज़ किए हैं वो slightly हो रहा है वो, और gently हो रहा है या suddenly हो रहा है, sharply हो रहा है, जो भी increase और decrease हो रहा है. So make sure you are using the right word. Do not run after complicated words that you are not familiar with. So avoid using such words. So here are some vocabulary tips for you. Do not repeat words. Before you start to write, make a list of synonym words.
For example, words with the same meaning. For example, अगर आपका task है about the trends, so a lot of time you may be using the word increase. So कहीं पे increase हो रहा है या कहीं पे decrease हो रहा है. So before you begin the task, make a list of synonyms, or you can write it on the question paper as well if you are good with managing time, or you just make a list in your mind. So what kind of synonyms for increase and different type of increase you are going to use. See how many ways you can rephrase the title of the graph. Use one in the introduction and another in the conclusion with the same meaning. Paraphrasing is a very helpful tool for you here. Be careful with preposition, as we have already learned. They can make a big difference in meaning. For example, rose by is very different from rose to. And also learn your verbs with the prepositions that goes with that. So these are my vocabulary tips for you.